Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Specially abled people in illegally occupied Gilgit-Baltistan suffering due to government's apathetic attitude. Floods continue to inflict havoc in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Authorities provide no relief. Srinagar holds 22-day-long coaching camp to train players for World Pencastilat Championship. Digi Mela in Jammu generates awareness among the public about digital solutions and new technologies. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the festivities of Telangana's famous Bonalu festival. An illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan has become the worst place to live for specially abled people. With educational deprivation and no special benefits, the life of the disabled in the region is filled with sufferings and setbacks. They have repeatedly put forward their issues before the government, but nothing has been done so far. It's been more than 7 decades that the people of the illegally occupied Gilgit-Baltistan are deprived of fundamental rights. In the region where public is clamoring for their rights and protesting Pakistan's misrule in order to end their sufferings, there is another group of people in Gilgit-Baltistan who are fighting with both the government's discrimination as well as their physical disability. There is a provision of just 2% quota for specially abled people in government jobs, but even that is not implemented in true spirit. Fed up with government's false promises, these people recently came out on streets to demand their rights. They said there are around 70,000 specially abled people in Gilgit-Baltistan, but the government is doing nothing to ensure their welfare. गिलगित बल्तिस्तान में सोशल वेलफेयर के अंदर जो रजिस्टर है वो 14,000 से कुछ अबव है, लेकिन ये भी एक अलमिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ज़रायों के मुताबिक 60-70 हज़ार तक में डिसेबल अफराद मौजूद हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक में जहाँ इस रेशो से डिसेबिलिटी होने पर रिसर्चेस होते हैं, यहाँ बुनियादी हुकूक फराहम नहीं हो रहे हैं। ये एक जुल्म है, अलमिया है और हक की खातिर निकलना हमारा हक है, तो इसकी हम के लिए ये सारा प्रोसेस हमारा चल रहा है। Time and again, the specially abled people in the region have protested against the government for failing to protect their rights, but all in vain. 2 years back, they were deceived with the announcement of 5 billion rupees under Gilgit-Baltistan Chief Minister's package, which was never really spent on their welfare. This time, these people are determined to not leave until their demands are met. हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमें इससे पहले भी हमने एहतजाजात भी किए, मुतालिबात भी किए, लेकिन हमें गिलासों के अलावा कुछ नहीं मिला है। और इस मरतबा हम ये पूरे आज़म के साथ और किश्तियाँ जला के आए हैं। जब तक हमारा मुतालिबा हल नहीं होगा, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और हम एक ही एजेंडा लेके, एक ही पॉइंट लेके आए हैं। हमारा रोज़गार का एजेंडा है और इससे पहले हमें रोज़गार देने के लिए सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे, जो कि हम उस पर खुश होते रहे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से ब्लाइंड अफराद में जो है अभी अवेयरनेस से पहले की तरह नहीं है और बहुत दफ़ा बाहर निकले, इनको पता है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह इनसे हर हाल में अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बेशक It's not just about the jobs and other benefits. The government has not even bothered to provide them a decent education. There is only one special education complex in the entire region where the hostel too has been occupied by the Pakistan's National Accountability Bureau officials.
As per the estimates, 99% of specially abled children in Gilgit-Baltistan are still not receiving any education. Government continues to show its apathetic attitude towards these people, forcing them to live a life in darkness. And next we take you to the Giza district of illegally occupied Gilgit-Baltistan, where torrential rains and flash floods continue to wreak havoc. Locals are in the state of distress, but the authorities have failed to provide any necessary help. Have a look. Demolished houses, ravaged trees, debris flow and the helplessness of locals. This is the picture of Imit village in Ishkuman Valley of illegally occupied Gilgit-Baltistan's Giza district, where torrential rains and flash floods have inflicted havoc. Despite having no other shelter, people are forced to leave their homes, which are either filled with water or can turn into ruins anytime. The laid-back attitude of both the government and the authorities has led the flood to take the entire village in its grip, affecting a large number of people. People are asking for help, but their plight doesn't seem to bother them even a bit. पहला तो रोड ब्लॉक है, बाकी ये सारा आवाम सैलाब के जद में आए हैं, लोग अपना घरों में घर सारे बह गए हैं। गवर्नमेंट का एक एक्सीवेटर यहाँ हमारे पास है, उसके लिए भी शेर किला से गवर्नमेंट का ट्रक आया है कि इसको शेर किला ले जाना है। क्या ये आवाम नहीं है? अभी तक कोई एसी नहीं आया है, डीसी नहीं आया है, एसपी नहीं आया है, तो हम इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? Similarly, many more villages in Ishkuman Valley have been severely affected by floods, and locals are in a state of despair. And it's not for the first time that floods have hit the region. Almost every year, the same situation arises, but even then, the authorities have made no learning. इस सैलाब ने आके शलियाबाद नाम का गाँव को अपने जद में लिया, जहाँ पे 33 घराने बस्ते उन घरों में अंदर दाखिल हो गया और शलियाबाद के जो गाँव है वहाँ के फसलों को नुकसान पहुँचाया, दरख्तों को नुकसान पहुँचाया। और यहाँ पे हमारे नाले में एक रस्पी की बनी हुई पुल थी, उसको भी डैमेज कर दिया। और हमारे इमित गाँवों के जो वाटर चैनल्स थे उनके वो सरबंद को भी कोई 11 चैनल्स है, उनके सरबंद को भी ख़राब कर दिया। तो क्या 33 घरों में से कोई 15 घर भी ख़राब हुए हैं। टीमें 60 वट की टीमें यहाँ अपनी मदद आप काम कर रही है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई इमदाद का सिस्टम नहीं है। Suffering the fury of nature, locals who are seeking fundamental assistance from the authorities have received mere condolences from them. Such disasters could also be attributed as man-made, as it is due to the continuous intervention of Islamabad in the illegally occupied Gilgit-Baltistan that has caused massive disturbances in the ecological balance. Melting of glaciers is one of the consequences of the environmental degradation rampant in the region. And next we move on to Jammu and Kashmir, that recently organized a Pencaxilit national coaching camp in its capital Srinagar. Aimed at preparing the team for 19th World Pencaxilit Championship 2022, which will be held soon at Melaka in Malaysia, a number of players from different parts of the country as well as paramilitary forces took part. Have a look. Around 38 players from different states and paramilitary forces, including SSB or Sahasra Seema Bal, congregated at the Indoor Sports Hall Polo Ground in Srinagar to be a part of the 21-day-long Pencaxilit National Coaching Camp.
Organized under the aegis of Malaysia Youth and Sports along with the National Olympic Committee of Malaysia, the camp was aimed at preparing a team for the 19th World Pencak Silat Championship 2022 to be held at Melaka, Malaysia. From Jammu and Kashmir, 8 players are representing the country in the World Championship. It was for the first time that Pencak Silat or any martial arts discipline national coaching camp was organized in the region. सिलेक्टेड है हमारे लॉट जिसमें 17 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं। हम हर कैटेगरी में पहली बार इंडियन टीम हर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है और ये पहली बार इंडिया कैंप हम श्रीनगर में कर रहे हैं क्योंकि एज यू नो इंडिया में इस टाइम पे हर जगह पे गर्मी है और बीइंग एन हाई ऑल्टीट्यूड बच्चों के ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर ये सबसे अच्छा है जहाँ पे हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग पर्पज़ का काउंसिल का हमारा सहयोग है जिन्होंने हमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे जगह दी है ट्रेनिंग करने के लिए और करीब 19 डिफरेंट स्टेटों से बच्चे आए हुए हैं। The players in the camp were trained for 2 categories, namely artistic, meaning shadow fight, and tending, meaning one-on-one fight. Participants were quite enthusiastic about the upcoming championship and also praised their coaches for all the efforts they are putting in their training. उन लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस प्रकार से हम जो इतने सारे देश आने वाले हैं उनके खिलाड़ियों से हम ठीक प्रकार से लड़ सकेंगे और जीत करके अपने भारत देश के लिए हम गोल्ड मेडल जीत के ला सकेंगे। इसलिए हमारे स्टेमिना पे, हमारे एंडोरेंस पे, हमारे एक एक टेक्निक पे बहुत ध्यानपूर्वक हमारे जितने भी कोच हैं वो ध्यान दे रहे हैं और हमारी तैयारी करा रहे हैं ताकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम मेडल जीत करके देश का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। 3 सेशंस में हमारी प्रैक्टिस होती है। पहले सेशन में हमें कराया जाता है स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग, फिटनेस की ट्रेनिंग और दूसरे सेशन में हमें बेसिक्स किया जाता है। जो हमें बेसिक्स है हमारे उन्हें मजबूत कैसे करा जाता है ये सब सिखाया जाता है और जो थर्ड सेशन होता है उसमें टेक्निकल सीजर स्विप वगैरह कैसे यूज़ करते हैं और जो हमारा अपोनेंट है उसको काउंटर कैसे देते हैं ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ जो हमारे इरफान सर हैं वो बहुत ही अच्छी टेक्निकल हमें कोचिंग दे रहे हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर आएंगे और इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। Pencak Silat is a non-aggressive form of martial arts which revolves around punching, kicking, striking, grappling techniques and throwing. It involves full body fighting where any part of the body can be used and any part of the body can be attacked. This form of martial arts originated in Indonesia as a means of self-defense and turned into a competitive sport. Over the years, Pencak Silat has become immensely popular in India and has produced a number of players who have made their name at national and international championships. And Jammu and Kashmir is moving on the path of digital transformation. Be it education, agriculture or service sector, digitalization is taking place at a fast pace, reducing corruption and bringing transparency. At present, the government departments in the Union Territory are providing a number of e-services about which the public may not be aware of. To overcome this issue, the administration recently invited citizens to be a part of Digi Mela that was organized in all districts of the Union Territory. Let's take a look at the one held in Jammu. The Jammu and Kashmir administration is on a mission to make all services easily accessible to the people without human interface. And to make it a reality, it is necessary to generate awareness among people about digital solutions and new technologies. Considering the same, Digi Melas were held in all districts of the Union Territory
under the Digital Jammu and Kashmir Week organized by the Information Technology Department. At Kala Kendra in Jammu, around 35 kiosks were set up by various departments and banks to make the public aware about the digital services and the process extended by them. The event was aimed at making the people of Jammu and Kashmir digitally empowered and bring ease, transparency and convenience in public service delivery. सभी ऑनलाइन सर्विसेज एक नई चीज़ है, उसके प्रोसेसेस नए हैं, तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए यहाँ आ सकते हैं या यहाँ पे आके अप्लाई भी कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का स्टॉल है, दे विल असिस्ट, सबकी मदद की जाएगी सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए। और बट खासकर मैं ये भी कहना चाहूँगी दैट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। ये एक प्रोसेस है, इसको सेट होने में और परफेक्शन की तरफ आने में समय लगता है, बट दिस इज़ इनफैक्ट डिजिटल, अब हर चीज़ डिजिटल है, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट वी ऑल नीड टू अडॉप्ट। During the week-long celebration, the citizens were also imparted awareness about online services like Aapki Zameen, Aapki Nigrani, O Azan, Umang, E-Unnat, Rapid Assessment System, DigiLocker and many more. Besides local people, the officials of district administration, members of Panchayati Raj institutions and school students also attended the event. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने सबने अपने आप को बड़ा शो किया है कि किस तरह से हर डिपार्टमेंट में हर सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। जो जो हमारे डिपार्टमेंट्स में लैक्स कमियां थी, सब कुछ था कि जो काम हमें थोड़ी टाइम से होते थे, डिजिटल होने की वजह से सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया हुआ है, तो इससे पहले हम सोशल वेलफेयर में जाते थे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो हमें टाइम लगता था, लेकिन अब हम घर बैठे अपने फ़ोन पे ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से बड़े सारे यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, यहाँ आकर हमें बहुत अवेयर हुए हैं कि हमें किस किस फील्ड में क्या क्या अवेयरनेस, क्या क्या काम जल्दी हमारे हो सकते हैं। पहले क्या होता था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हम डिपार्टमेंट्स में जाते थे, उधर ऑफलाइन सारा देखता था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ है, ऑनलाइन अवेयरनेस है। अब मैं इधर आई हूँ, मैं जिस भी डिपार्टमेंट की मुझे कंफ्यूजन होगी, जैसे एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, मुझे किसी का भी जानना है, मैं उधर स्टॉल लगे हुए हैं, मैं उधर जाके पूछूंगी, वो मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं, फिर मैं ऑनलाइन सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आने जाने की, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। मैं कुछ भी ऑनलाइन करूँगी, मुझे नोटिफिकेशन प्रॉपरली आएगी मेरे फ़ोन में या कंप्यूटर में या किसी में, मेरे को प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलेगी। अच्छी चीज़ है ये। In the last few years, Jammu and Kashmir has made huge strides to promote digitalization. Several fair price shops and ration depots across the territory have been equipped with electronic point of sale or EPOS machines. These devices are linked to the Aadhaar card of the beneficiaries, and thus whoever purchased the ration, it authenticates the details of the ration card holder before generating the bill. Digitalization in agriculture in the form of e-NAM or National Agriculture Market is also benefiting a number of farmers as well as traders in Jammu and Kashmir. Using this portal, they can trade around 150 commodities, that too in the comfort of their home, without even physically appearing at the auction site. The digitization of land records using drone technology is yet another milestone. It will not just help villagers to use their residential property as an asset, but also the revenue department to develop a comprehensive and transparent land management system.
Similarly, many such IT initiatives have been taken in Jammu and Kashmir. To aware citizens and help them avail their benefits, DigiWeek was a great step. ये सब जो इस प्रोग्राम यहाँ पे सेटअप हुआ है, दिस इज ओनली फॉर द अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक, क्योंकि अभी जो यहाँ के जो लोकल आइट्स हैं जो तो थोड़े अभी इतने डेवलप नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम रखा है ताकि उन्हें पता चले कितनी अवेयरनेस हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्कूल है, हम अपने बच्चे लेके आए हैं तो वहाँ भी एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ. फॉर एग्जांपल जो क्लासेस हो रही हैं अभी ऑनलाइन हो रही है. मोरोवर इफ वी स्विच टू बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वहाँ हमारा सारा कैशलेस हो रहा है. जैसे जेके बैंक का है, तो ये सब इट्स वेरी गुड. Jammu and Kashmir administration has come a long way to promote e-services in almost all its departments. Today, the detail of every penny spent in the Union Territory is in the public domain. Moreover, a total of 209 government services have been integrated with rapid assessment system for real-time feedback from citizens. And this will likely be a game changer in respect of quality of services. And today in our section of Incredible India, we'll take you to the southern state of Telangana to witness the annual celebrations of the Bonalu festival. Observed mainly in the twin cities, Hyderabad and Sikandrabad, Bonalu is a famous Hindu festival in which goddess Mahakali is worshipped. Decked in traditional attires and carrying Bonalu on their head, women in Hyderabad city of Telangana throng to various temples of goddess Mahakali to celebrate the most auspicious Bonalu festival. During this occasion, Mother Goddess is worshipped in regional forms like Maisamma, Pochamma and Yelamma. Some women are even said to face a spell of trance as they dance with balancing pots to the rhythmic beats of the drums in the honor of goddess Mahakali. Reflecting Telangana's rich culture and traditions, the main celebrations of the Bonalu festival are held at city's Mahakali temple, Lal Darwaza, and the historic Akanna Madanna temple at Haribauli. भगवान को बोनम चढ़ा के अच्छे से प्रे करते हैं कि हमारे प्रार्थना सुने वो. This Bonalu is Telangana's famous festival. We have so much belief in Bonalu. Everyone believes so much in this god. And Lal Darwaza is very famous in Hyderabad, overall Hyderabad. So we believe so much. A male dressed like Pothraj, who is believed to be the brother of goddess, holds a prominent position in the celebrations. He is represented by a bare-bodied and a well-built man who wears a small tightly draped red dhoti and bells near ankles. He also has a luxurious rub of turmeric and vermilion on his head. He dances to the resounding drums and has the power to lead the ladies who are in trance state. Once the procession reaches the temple, women make offerings of rice cooked with milk, jaggery and many more items, also known as bonum, to the goddess along with vermilion, bangles and sari. Bonum is said to have medicinal values and wards off many diseases. इसलिए बनाते हैं कि नया चावल सब कुछ नया, बारिश गिरने से सब कुछ नया आता ना, उसके वजह से नया सब कुछ फ्रेश चावल बना के माता जी को नैवेद्य के लिए खिलाते हैं. वो खाने के
बाद हम लोग उस चावल स्टार्ट करते खाना। ये एक ट्रेडिशन माना जाता है पिछले सालों से कि एक जमाने में लोगों को तेलुगु में गतरा बोलते हैं, जिसको फीवर डिसीज आता है, जो सब लोग समझ नहीं आके माता को आके मानते हैं कि माता ये करने से, ये सब करने से आपको बोनम बोनम में क्या क्या मिलाते हैं, शुगर, राइस, गुड़, शक्कर, बेल्लम सब मिलाते हैं, जो मिलाने से टर्मरिक एंड जो नीम ट्री है ना, ये सब मिला के जो प्रसाद बनाते हैं ना, वो खाने से जो भी डिसीज रहता है ना वो जाता है, इसीलिए वो बनाते हैं। माता को ऐसा प्रे करते हैं, वो जाने के बाद माता सबको ठीक कर देती है। During the processions, a colorful paper structure which is supported by bamboo sticks is also brought and offered as part of the ritual to show respect to the deity. Observed on 3 different Sundays at different places in the twin cities Hyderabad and Secunderabad, the festival's origin traces back to the 18th century and till date it is observed with same enthusiasm. Bonalu in Telangana are a very special festival. They are very typical to Telangana. They are a native festival of Telangana people. So every Bonalu has a lot of history. If you take this Mahankali Bonalu itself, it has a history of over 250 years. When way back in 1843, the police battalion which had gone to Ujjain on a mission, they had prayed for the plague affected people here, and it had stopped next day. So the battalion commander had brought back the idol and placed it very much here in front of the police chowki, and since then it has been celebrated. Intended to ward off coronavirus and usher in peace, this annual festival is also considered a thanksgiving to the goddess for fulfillment of vows. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team. अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सेगमेंट आपको सोचकर बताता हूँ।